वेलकम बैक टू दी CADDX। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। गो टू फाइल्स, न्यू, टेम्पलेट, सिलेक्ट मॉडल, टॉप व्यू, select section view, change the direction, okay. Go to file, part, flat, okay. Go to model, part, isometric, okay. Select this and change the ratio 1:1. Okay, drag views, go to annotation, smart dimension, select this edge 100. First go to setting, documents property, dimension, linear, text position, dimension, font 3, and go to tolerance, bilateral 0.2, 0.2 and 0.2. Use dimension size, change 1.5, 0.5. Okay, read this dimension, smart dimension, okay. Select this,
Select this and this 21 mm, and this and this 11 mm, 10 mm. Select this and this 10 mm. Select bending this edge and this edge 50 mm, this edge, this edge, this face 13 mm. Select this edge and this edge 15 mm. Now go to this and this 7.50 mm. Select this 15 mm. Select this and this 15 mm. This and this 20 mm. Select this and this 2.5 mm.
select chamfer dimension 5 into 45, add this text, both side, select again chamfer dimension, again both side, select OK, select this is OK. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।